हेलो गाइस, आज आमे पढ़िबा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज मोशन? फर्स्ट जानिबा मोशन कौन। इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन फॉर दैट इंटरवल ऑफ टाइम। जेतेबेले कौनसी बॉडी तार सराउंडिंग और समय सहित निजर पोजीशन चेंज करि थाए तो सेतेबेले आमे सेही समय पाई बॉडीटी मोशन रे अछि बोली आमे कहि थाओ। दिस टाइप ऑफ मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मोशन, सेकेंड वन इज रिलेटिव मोशन। तो आमे फर्स्ट जानिबा एब्सोल्यूट मोशन। इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट एंड द बॉडी इज इन मोशन तो मोशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोशन। जेतेबेले फ्रेम ऑफ रेफरेंस टी रेस्ट रे थाए और बॉडी टी मोशन रे थाए सही मोशन को आमे एब्सोल्यूट मोशन बोली कहि थाओ। रिलेटिव मोशन, इफ बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द बॉडी आर इन मोशन विथ डिफरेंट वेलोसिटीज दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। जेतेबेले उभय फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड बॉडी मोशन रे थांती डिफरेंट वेलोसिटीज रे सेतेबेले आमे सेही मोशन को रिलेटिव मोशन बोली कहि थाओ। तो एबे जानिबा रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट फॉर देयर टाइम। तो जेतेबेले कौनसी बॉडी तार सराउंडिंग और समय सहित कौनसी पोजीशन रे तार पोजीशन रे कौनसी चेंज आनी न थाए सेतेबेले सेही समय पाई बॉडीटी रेस्ट रे अछि बोली आमे कहि थाओ। रेस्ट क्लासिफाइड टू कैटेगरीज, एब्सोल्यूट रेस्ट, सेकेंड रिलेटिव रेस्ट। What is absolute rest? If both the frame of reference and the body are at rest, the case is said to be of absolute rest. जेतेबेले उभय फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड बॉडी रेस्ट रे थांती सेतेबेले आमे एब्सोल्यूट रेस्ट बोली कहि थाओ। Relative rest, if the frame of reference and body both move with some velocity they are said to be at relative rest with respect to each other. If the frame of reference and body both move with some velocity they are said to be at relative rest with respect to each other. जेतेबेले फ्रेम ऑफ रेफरेंस एवं बॉडी मूव करि थांदी किछि वेलोसिटी रे सेतेबेले आमे सेही रेस्ट को रिलेटिव रेस्ट बोली कहि थाओ। टू कैटेगरीज ऑफ मोशन। आमर तीनोटी मोशन अच्छी किंतु आमे दुईटी ही पढ़िबा, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। आ गोटे अच्छी स्टैटिस्टिक्स जोटा कि हायर स्टडी रे पढ़िबा। तो फर्स्ट देखिबा काइनेमेटिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिफाइंस मोशंस विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम इग्नोरिंग द कॉज ऑफ दैट मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स होची गोटे आमर फिजिक्स रो ब्रांच दैट डिफाइंस मोशन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। यह स्पेस और टाइम रे किछि मोशन करि थाए किंतु इग्नोरिंग द कॉज ऑफ दैट मोशन, जो मोशन करि थाए तार आमे कॉज को इग्नोर करिबा ताहा को ही आमे काइनेमेटिक्स बोली कहि थाओ। दीज इक्वेशंस लाइक 5 काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स। आमर 5टी काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स अच्छी, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट देखिबा डिस्प्लेसमेंट कौन। तो डिस्प्लेसमेंट कौन? जेतेबेले आमर बॉडी किछि मूवमेंट करि थाए गोटे डायरेक्शन रे, मूवमेंट इन ए गिवन डायरेक्शन, किछि डायरेक्शन रे जदि गोटे बॉडी मूव करि थाए ताहाले आमे ताको डिस्प्लेसमेंट हैला बोली कहि थाओ। तो वेलोसिटी कौन? वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, केते चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट केते हैला ताको आमे वेलोसिटी बोली कहि थाओ। तो एक्सीलरेशन कौन? एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, केते वेलोसिटी हैला ताहाको आमे एक्सीलरेशन बोली कहि थाओ। टाइम इंटरवल, रेफरेंस फॉर चेंजेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यही सब टाइम अनुसार ही चेंजेस होता है। तो एबे जानिबा डायनामिक्स। व्हाट इज डायनामिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विथ द कॉज ऑफ मोशन।
डायनामिक्स गोटे ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहाँकि मोशन और तार कज ऑफ मोशन को मध्य दर्शाई थाए। इन दिस ब्रांच वी शैल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कज ऑफ मोशन। एइथिरे आमे डिटेल्स रे पढ़िबा कज ऑफ मोशन, that is force, its unit, Newton's laws, dealing with it, and about qualitative and quantitative effect of application of force on bodies। एबे देखिबा डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कौन आउ डिस्प्लेसमेंट कौन? व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस गोटे स्केलर क्वांटिटी आउ डिस्प्लेसमेंट गोटे वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोएड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोएड। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोएड। यह डिपेंड्स करे पाथ फॉलोएड किंतु डिस्प्लेसमेंट रे इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोएड। Distance it is added algebraically, displacement it is added vectorially। यह algebraically होता है, यह vectorically होता है कहीं एटा गोटे स्केलर क्वांटिटी, एटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस गोटे आमर स्केलर क्वांटिटी आ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट गोटे वेक्टर क्वांटिटी, से एटा ऐड होता है vectorially। Distance between two points can be greater than or equal to magnitude of displacement। किंतु displacement रे magnitude of displacement between two points it always less than or equal to the distance between them। Distance it is affected due to a change in position of original of the coordinate system। Displacement it remains unaffected due to a change in the position of origins। Distance it is always a positive quantity। Displacement it can have positive and negative values। Distance रे always सबु बेले positive quantity किछि आसी थाए किंतु displacement रे positive with negative दुईटा को value थाए। Distance for a body in motion its value is never zero। डिस्टेंस रे जेते बेले गोटे बॉडी टी मोशन रे थाए सेते बेले ताहार वैल्यू जीरो होई न थाए। फॉर ए बॉडी इन मोशन इट मे बी हैव जीरो वैल्यू। किंतु डिस्प्लेसमेंट रे जेते बेले गोटे बॉडी मोशन रे थाए सेते बेले तार वैल्यू जीरो होई पारे। एबे जानिबा स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। तो आम स्पीड क्या कहवा जिते बड़े गोटे बॉडी किसी डिस्टेंस कवर करे किसी समय भितर किसी डिस्टेंस कवर करे ताहले आमे ताकू स्पीड बोली कही थाउ। इट डेल इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम डेल टी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी। If the time interval del t is chosen to be very small, that is del t 0, the corresponding speed is called instantaneous speed। Instantaneous speed equal to limit del t 0 del s by del t equal to ds by dt। Speed is a scalar quantity, its units are centimeter second inverse and meter second inverse in CGS system and MK system respectively। वर्तमान पढ़िबा वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द करेस्पोंडिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी कौन? जिते बड़े आम गोटे ऑब्जेक्ट मोशन रे थाए सेते बेले आमे रेशियो काढ़ी थाउ कार डिस्प्लेसमेंट आउ तार टाइम टेकन केते डिस्प्लेसमेंट गला आउ केते टाइम भितर केते डिस्प्लेसमेंट गला। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इक्वल टू वेलोसिटी। एबे देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फास्ट देखिबा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ व्हिच इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ सो एवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। जिते बेले आमर किछि इक्वल डिस्प्लेसमेंट एवं किछि इक्वल समय सीमा भितर
वेलोसिटी होता है ताको आम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोली कही था। Variable velocity. An object is said to be moving with a variable velocity if either its speed changes with time or direction of motion changes with time. Variable velocity. An object is said to be moving with a variable velocity if either its speed changes with time or direction of motion changes with time. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ିଟି ମୁଭ୍ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ପିଡ଼ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଭେରିଏବଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି କହିବା। ଆଭରେଜ୍ ଭେଲୋସିଟି. When an object is moving with variable velocity, then average velocity of the object is defined as the ratio of total displacement to the total time interval in the given displacement. तो जेतेबेले गोटे बॉडी मूव करुची डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इन द गिवन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ द वेरिएबल वेलोसिटी, then the velocity of an object at a given instant of time or at a particular point of its path is called instantaneous velocity. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଭେରିଏବଲ୍ ଭେଲୋସିଟିରେ ବା ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟ ଭେରିଏବଲ୍ ଭେଲୋସିଟିରେ ମୁଭ୍ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ then the velocity of an object at a given instant of time, the velocity of an object given instant of time, से velocity रो किछि instant time थिबो एवं और at a particular point of its path एवं तार किछि particular path थिबो ताको हम instantaneous velocity बोली कहि थाओ. नेक्स्ट देखिबा acceleration. What is acceleration? Acceleration is defined as the time rate of change of velocity. Acceleration is defined as the time rate of change of velocity. Acceleration equal to velocity by time. The motion may be uniformly accelerated motion or it may be non-uniformly accelerated motion depending on how the velocity changes with time. तो गोटे मोशन केतेबेले यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड होउची बा नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड होउची डिपेंड अपन वेलोसिटी कि वेलोसिटी टाइम सह केते चेंज होउची ता अनुसार हमर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होइथाय बा नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होइथाय. Acceleration is a vector quantity. Acceleration गोटी आमर vector quantity. Its unit of CGS system is cm, centimeter second inverse square, and in MK system meter second inverse square. Acceleration रो CGS system हेउची centimeter second inverse square and MK system हेउची meter second inverse square. Then देखिबा types of acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन. एबे देखिबा फर्स्ट देखिबा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रे वेलोसिटी चेंज होइथाय इक्वल टाइम इंटरवल रे इक्वल वेलोसिटी चेंज होइथाय. फॉर एग्जांपल गोटे बॉडी फर्स्ट ए बॉडी रू बी बॉडी को जीवा पाए 5 मीटर पर सेकेंड लगिला. देन बी बॉडी रू सी बॉडी को जीवा पाए मध्य 5 मीटर पर सेकेंड. सी बॉडी रू डी बॉडी जीवा पाए 10 मीटर पर सेकेंड. डी रू एफ 15 मीटर. तो 0 सेकेंड रे ए टू बी ए अच्छी 0 सेकेंड रे ए टू बी 2 सेकेंड, बी टू सी 4 सेकेंड, सी टू डी 6 सेकेंड, डी टू एफ 8 सेकेंड. तो आमे जदि सी रु बी आमे सी बॉडी रू ए बॉडी एक्सिलरेशन काढ़ा तो कौन करिया वेलोसिटी बाई टाइम करिया. वेलोसिटी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 बाई 4 बाई 2 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जदि आमे डी बॉडी रू सी बॉडी एक्सिलरेशन काढ़ा
तो कौन 15 माइनस 10 बाई 6 माइनस 4 इक्वल टू 5/2 2.5 तो आमर कौन एक्सीलरेशन सब गुड़ा सेम आसूची 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आम आपको से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोली कही था। देन देखिबा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वाली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल एक्सीलरेशन कौन होता है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वाली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किंतु वेलोसिटी चेंजेस अच्छी देखो ए थिला 0 मीटर पर सेकेंड ए रु बी को जीवा को आमको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड बी रु सी जीवा को वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड रे कि सी रु डी जीवा को 10 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड तो आम देखा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम जदि आम सी रु डी एक्सीलरेशन काढ़ा सी बॉडी रु डी बॉडी तो कौन हम 10 माइनस 5 बाई 6 माइनस 4 तो 5/2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जदि आम डी रु ई बॉडी एक्सीलरेशन काढ़ा तो वेलोसिटी बाय टाइम 20 माइनस 10 बाई 8/6 20 रु 10 तो 10/2 10/2 5 मीटर पर सेकेंड तो आमर एक्सीलरेशन कौन आसिला चेंज आसिला तो यहाँ को आम कहते नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जोटी वेलोसिटी चेंजेस थिबो किंतु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थिबो ताको आम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोली कहिबा। देन देखिबा एवरेज एक्सीलरेशन द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल चेंज इन टाइम एक्सीलरेशन एवरेज इक्वल टू total change in velocity by total time del v by del t equal to v2 minus v1 by t2 minus t1। ଏବେ ଦେଖିବା instantaneous acceleration the acceleration of a object at a given instant of time acceleration equal to limit del t 0 limit 0 del v by del t equal to dv by dt d by dt v है आमर कौन dx by dt तो आमर हो गला एक्सीलरेशन इक्वल टू d² x by dt